जी, तो माशाल्लाह यू गाइस हैव प्रोग्रेस सो मच। मुझे याद है हमारी पहली क्लास, और उस पहली क्लास में मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन भी नहीं हो रहा था हमसे, है ना? अब माशाल्लाह यू आर वेरी वेल प्रोग्रेस्ड। तो अल्लाह ताला ने डोर्स तो ओपन किए हैं हम लोगों के लिए, बिकॉज़ ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस क्लास, और आप लोगों की मेहनत है। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारी ये क्लासेस हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी जाएँ, और हो सकता है कि आपको जो अपनी थिंकिंग है वो सिर्फ ग्रामर से हटा के कॉमन सेंस को भी साथ उसके शामिल करना पड़े, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज एंड दैट्स हाउ लैंग्वेजेस इवॉल्व। ठीक है? तो हमने अभी तक जो कर लिया है, आपको इसम की वर्ल्ड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आई अज्यूम इसम वर्ल्ड आपको पता है। ठीक है? आपने फेल्स को भी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली देखा है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, अब फेल्स जो है यूजुअली उनको कैटेगराइज किया जाता है। सो मैंने अभी तक आपको बताया कि एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उससे बनता है फोरबिडिंग और उससे बनता है कमांडिंग। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। So higher level umbrella में अगर आप देखेंगे तो there are two types of fails that you would see basically, present and past. That's it. But जब आप grammarians के level पे देखते हैं तो they categorize fails into multiple categories. So one is past, the other is present, the third is forbidding. They categorize it as a different category of fail, and they categorize command is a as a different category of fail. So जब भी आप एक fail को देख रहे हैं तो आप you're trying to identify if it is a past tense, if it is a present tense, if it is a forbidding, or if it is commanding. It can be one of the four when you're looking at any fi'l in the Quran. ठीक है? We know that from the methodology perspective, forbidding and commanding actually are driven from present tense, but grammatically they are treated separately as a separate category. Right? So now what we are going to do is another type of fail, which is passive. Passives we have not done yet. So इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले context बताता हूँ, and inshallah we take things from there. Yeah. So let's say I write a sentence, Ali eats a cake. ठीक है? So this particular one, we know who is doing the action. Doer of the action is known to us, right? But if I say the cake was eaten, now the action on the cake is same. It was eaten in both cases. Like in the first case, you have the doer that is known, right? So known doer. And in the second case, you have the doer, which is unknown. Correct? We don't know the doer. So हमें पता नहीं है किसने एक्शन किया है. Many times in the Quran, passives are used to just give a more thinking room to the reader. So when you're reading an ayah, a passive is used. For example, they were punished. Instead of he punished them, instead of saying he punished them, it might be said they were punished. And now this opens up a question, who punished them? So this is one way Allah uses passives in actually explaining to you that such and such people punish them, then such and such nation punish them, then I punish them. If he wants to take your imagination to a much broader scale, he would use passives. Okay, so जब आपको doer को hide करना होता है on purpose, when the doer has to be hidden, needs to be hidden on purpose, then you use passives. Okay,
So many times in the political landscape, in the legal landscape, you will see passives used by lawyers and politicians. So आप किसी politician से सवाल करें कि why was such and such money spent in such and such way? So he would say, we were told that it was needed. We were told that it was needed. Who told them? Not mentioning. Sometimes going diplomatic requires passives. Okay, open statements कई दफा देने के लिए पैसिव की जरूरत होती है. कुरान में काफी वाइडली यूज होता है पैसिव. ठीक है, so we have to learn what passive is. So basically fundamental passive is a type of fi'l in which the doer is unknown basically. ठीक है, so that's the passive. It still works in the same way as any other fi'l. It has inside pronoun, it has that full chart, past tense, present tense, just like any other fi'l that you know, but the doer is not known. Okay, so for example, nasara. Oh, it's too small. Wait a second. Nasara. It's an active fi'l meaning he helped, right? Whereas nusira is a passive fail, means he was helped. He was helped. Okay, so so we need to understand how to recognize the passives. The inside pronoun that you have in the fail, in case of active, acts as a doer, but in case of passive, it doesn't act as a doer, it acts as somebody on which the action was done to. Right? He was helped. Now this time Hua is the one the action was done to. So instead of calling it a doer, we are going to call it the inside done to. Okay, so that's what we are going to call. एक और बात ध्यान में रखिए, लास्ट टाइम मैंने बहुत ब्रीफली टच किया था आप लोगों के साथ कि जो डिटेल्स होती हैं फेल्स की, जिसको मफऊल कहते हैं, उसकी कैटेगरीज होती हैं. बहुत ब्रीफली वी टच्ड अपॉन इट, and one of those categories was maf'ul bihi. Maf'ul bihi answers the question what and who. Right, so for example, I'll give you an example. Nasara Nasara Muhammadan. Nasara Muhammadan. This is he helped Muhammad. Now, who did he help? Muhammad. Who did he help? Muhammad. So this maf'ul is because it is coming out of the answer of a question who, this is maf'ul bihi. Okay, who and what जो questions answer करते हैं, they are maf'ul bihi. For example, kataba kitaban. Kataba kitaban. He wrote a book. Okay, what did he write? Book. Correct. Book. Now this is the case of what, right? So the maf'ul that actually comes out of a question of what and who is called the maf'ul bihi. Called the maf'ul bihi. And it should always be in nasab state. Yes, maf'ul is always nasab. Okay. Right? So the passives are those fi'ls that cannot take maf'ul bihi.
Okay, for example, if I say he, let me write for you. He ate, he um, he threw, he sat, he calculated, he ran, he wrote, for example. Just few examples of fails. Okay. Now I want us to complete this as a sentence. Give me anything. He ate. He ate. Anything. Apple. एप्पल साला मैं भी एक टाइम पे ही बोला He ate. Shall I write he ate apple or he ate an apple? What should I write? An apple. An apple. Okay. What about he threw? A ball. A ball. Okay. He sat On a chair. on a chair. He calculated His speed. his speed. Just keep it to one. आपने इदाफा बना दिया. Just keep it to one word. His speed is idafa. Keep it to one word. He calculated. डिस्टेंस जी. Distance. डिस्टेंस Calculate distance. ठीक है. He ran Fast. 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 He wrote Book. a A book. book. ठीक है. Now इस एक और करते हैं. He sat. Oh, I we did he sat already, right? Okay, sure. Oh, sorry. He submitted. Homework. His. पर his लगाऊंगा तो फिर इजाफा बन जाएगा. He submitted homework. Homework. अच्छा, ये कुछ इंग्लिश एग्जांपल्स हैं. कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती है, मिसाल के तौर पे he ate an apple. Okay, just consider an apple as one single bucket. Okay, this is one single bucket. This is something. Okay, this is something. Apple. He threw a ball. A ball is something. He threw something. He ate something. He sat on a chair. Can you write a word in front of he sat without using on a or anything? Can I say he sat dog or he sat him or he sat a cat? Can I say this? Is it right? No. No. Right? So this means this is a fail that actually cannot take a maf'ul bihi, because you cannot directly put something that answers the question what or who in front of it. Yeah? So you would have to ask what did he sat on? Okay? जब आपको कोई मफूल लगाने के लिए किसी एडिशनल हर्फ की जरूरत पड़ जाए, right? Additional preposition की जरूरत पड़ जाए, that type of fail turns into a passive. That type of fail does not take a maf'ul bihi. ठीक है. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे इंशाल्लाह. So he अच्छा, ran. अगर मैं लिखता he sat firmly या he sat, तो वो बेसिकली फिर ना होता ना, फिर मैं सवाल होता how he sat. जी, he sat firmly. ठीक है, उस वक्त नहीं होता. ठीक है. There are few fails. In some cases they take maf'ul bihi, in some cases they don't. ठीक है. Both examples exist. So what I'm trying to communicate to you is a concept called transitivity. Transitivity is an ability of a fail to take maf'ul bihi, basically. ठीक है. It's an ability of a fail to take maf'ul bihi. For example, he, कैसे मैं build करूँ? He learned English. ठीक है. Now if you can put something
or someone in front of a fail, then that fail is transitive. It means it can take maf'ul bihi. Take maf'ul bihi. Maf'ul bihi means what and who question. Okay? If we say he I'm just trying to construct an example. He slept. He slept. Now, how would you complete this sentence? Can you put something or someone in front of him? This word. Can he slept child? He slept Deeply. G? Deeply. He slept deeply. But deeply is a adverb, अच्छा right? तुम कह It's not noun. someone or something. It's how, right? So I'm after someone or something. What or who? Okay. He slept on the floor. On the floor, but that's the point. On the floor, you cannot use someone or something without using a preposition on. Exactly. Yeah. Right? You can't do that. So these types of fails are intransitive. Intransitive. Okay. They don't. You need something else, some other proposition to go with them to make sense. These types of fails. These types of fails are intransitive. They do not take maf'ul bihi. Meaning they cannot take a maf'ul that comes out of a question who and what. Okay? So इनका रिलेशनशिप होता है पैसिव्स के साथ. ठीक है? इसको हमें समझना जरूरी है. तो there are few fails in Arabic which are intransitive, there are few which are transitive. ठीक है? So passives की एक simplest definition यही है कि passives usually are the fails that cannot take a maf'ul bihi. So that maf'ul bihi actually becomes their done to inside. I'll give you an example. He slept को अगर मैं उठाऊं, he slept in the kitchen. He slept in the kitchen. No, this is where है ना. Okay. अब आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि who slept in the kitchen. If I ask this question, which I normally ask, who slept in the kitchen, my answer would be he. But this is giving me a doer of the failed sleep, right? If I say he was made to sleep in the kitchen. He was made to sleep in the kitchen. Then who was made to sleep? आपका आंसर उस वक्त भी होगा he. ठीक है? इसमें difference क्या है? You know that in the first case, he is the doer of the action. He actually slept. Yeah. In the second case, he was he also slept, but you do not know who made him to sleep. The doer of the action is missing here in this particular case, right? So in this particular case, this he was supposed to be a maf'ul bihi, but it could not because the fail was made passive. Let me give you Arabic examples. It will be easier for you. So in the passive world, what happens is you take a normal, let's start with past tense passive. Past tense passive. We have passives for present and past both. Past tense passive. So in the present tense, you have an active form which is nasara. You take a certain, in the past tense passive, you have the u beginning, and then you have a long a. Sorry, e. U e sound, long e. U and e sound.
in the past tense. So nasara would first start with the nu, Nusri. and where and in ignoring the last letter, you don't change the last letter because the last letter gives you the endings. Anything before that has a haraka, you change it to kasra. Okay, so this becomes nu si ra. फहद एक बात पूछूं, अगर ये लंबा जिस तरह करना है, अगर लंबा ई हमने करना है तो नुसी रॉ के अंदर स्वाद के बाद या नहीं आएगी? नहीं वो अच्छा, मेरा मतलब वो नहीं था, अच्छा मैं वो भी लंबा बताता हूँ नहीं उसका है। मतलब ओके, क्या. अब फॉर एग्जांपल the first thing to learn is that you have an OE sound in the passive past. So whenever you find a fail with OE, you will see it's a passive. For example, you might have heard the fail फुतिहत. क्या लिख रहा हूँ, कीबोर्ड चेंज हुआ. फुतिहत. फुतिहत. Actually, this is a passive fail. Okay, it was originally fataha. It was actually fatahat. Let me just say very explicitly, fatahat. It was made futihat. आप यहाँ पे देखेंगे first haraka is the u, the second is changed to e, and the remaining end is kept the way it is. Okay? So when you have ue sound in the long version, what I meant was, for example, you have a fail inqalaba. Inqalaba. This is the fail inqalaba. He came close. Okay. The passive form would be un. जहां पे सुकून होता है, you don't do anything. If there is a sukoon, you don't change that sukoon. So un would remain the same. Then you have qalaba. Last letter छोड़ के बाकी सब आप कसरा बना देते हैं. ठीक है. This will become un. Sorry, not long e, long u sound. I told wrong. Wait a second. Long u sound and one e sound. Long u and one e. So un u कुलीबा. un kuliba. Un u liba. अच्छा फहद एक बात पूछूं, ये इन कलाबा जो है ये जी जी. पास्ट टेंस चार्ट पे मैप तो नहीं होता है, वो तो नसरा होता है, ये तो कला इन क्यों नहीं होता? कसरा तो नहीं आता, कलाबा आता है मैं उस पे चार्ट पे. Kalaba? In Kalaba is a fail. That means he came close. Starts with in. It's a family in Sarf that you will learn inshallah. So ये एक particular pattern है और अच्छा ये ओके, ये हमने भी perfectly पढ़ा past नहीं है, tense है. हाँ, है ना? अगर आपने नहीं भी पढ़ा, I mean in the past tense we हाँ, said कलाबा don't worry about the beginning. We said worry about the ending, right? So it is absolutely fine in Kalaba. So what I'm trying to tell you is, in this particular case, you change the first beginning to u, and then wherever you had any other haraka other than sukoon, you keep on changing it to u until you find the second last letter that changes to e. It's e, regardless of whatever the length of the letter is. Last letter does not change. So if in Kalaba means he came close, un kuliba would mean he was made to come close. Okay. In this case, both have the hua inside, but in the un kuliba case, the action was done to him, to he. Action was not done by he. He was not a doer, but the action was done to him. You understand? doer is unknown in this one. Doer is unknown. Who did the action? We don't know.
राइट? सो जो प्रोनाउन इनसाइड प्रोनाउन होता है उसको डन टू कहते हैं. इन अरेबिक इट्स कॉल्ड नाइबुल फाइल. So I'm not worried about that term yet. So it's an action that is done to. So for your Nasara chart, you can produce the entire chart. Nasara would become Nusira. जी सॉरी वकास भाई. नहीं वकुल. जैसा मैं कहने लगा था, आपने कहा कि जब इसको हम लेके जाते हैं ये पोजेसिव में, तो इन कालाबा, तो पहला तो इन हो गया उन, फिर हमारे जी. पास फतह था, उसको भी हमने उसपे पेश दम्मा कर दिया. जी. तो देन ला को हमने ली क्यों कर दिया, उसको हमने वो लू क्यों लिखा, उन कुलुबा क्यों लिखा फॉर जी एग्जांपल. क्योंकि जो पैसिव स्ट्रक्चर है ना उसमें ऊ होता क्या है, ऊ साउंड देन अनदर ऊ. जब तक आपके पास नॉन सकून हरकत आते रहते हैं आप ऊ करते रहते हैं उनको. ठीक है. और जब आपके पास सेकंड लास्ट लेटर आता है तो आप उसको ई करते हैं. ऊ ई साउंड के ऊपर ऑपरेट करता है पैसिव. ऊ एंड सो ई, ठीक है. ऊ एंड ई. सो इट्स उन कू ली बिकॉज लाम इज द सेकंड लास्ट लेटर. दैट्स व्हाई यू डिड इट ई. ठीक हो गया. ठीक तो है. फॉर एग्जांपल अगर बा के बाद कुछ एक लफ्ज और होता, बड़ा लफ्ज होता, देन द बा वुड हैव बिकम पी. नहीं, क्योंकि आपका ये पूरा फेल है, ये एक फेल है इनकलबा. बा इज द लास्ट लेटर. यू डोंट चेंज द लास्ट लेटर, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट लेटर को चेंज करेंगे देन यू कैन नॉट प्रोड्यूस द पास्ट टेंस एंडिंग्स. सो इट विल बी लाइक उनकुलिबा, उनकुलिबा, उनकुलिबू, उनकुलिबत, उनकुलिबता, उनकुलिबना. उसी तरह का चार्ट है सारा. जी. तो ठीक है. अगर डॉक्टर साहब ये होता उन जो हमारा उन कुलिबत जो है नौसरात होता फॉर एग्जांपल, जी. तो उस वक्त हमने फिर बा को कर रहा था ना कसरा में. मैं आपका एग्जाम्पल लिख लेता हूँ फिर आई विल ट्राई टू आंसर. अगर ये नसरा है इसको हमने कर दिया नुसीरा. ये समझ आ गया कैसे कर दिया नुसीरा वकास भाई? जी जी बिल्कुल. सेकंड लास्ट को हमने जो कसरा किया सेकंड एंड लास्ट को कसरा कर दिया. अब नुसीरा हमारा हुआ फॉर्म है या पैसिव में. इसकी हिया फॉर्म एक्टिव में होती थी नसरत. यस. इस जगह पे बन जाएगी नुसीरत पैसिव में. शी वॉज हेल्प्ड. जी. यू अंडरस्टैंड? ठीक हो. नुसीरता. They both feminine were helped. जो लास्ट पार्ट है फिल का you cannot change because that is used to produce the past tense endings. Yes, that's correct. Yeah. Right? So you can't change the last part, but you change the second last part, which is you transform to E. अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल और जी एक बात पूछो, ये नुसीरता जो है, जी ठीक है, इसको अगर हमने इसमें रा के ऊपर जबर को नुसीरी ता क्यों नहीं हुआ वैसे? जस्ट के क्योंकि ता के अलिफ जो है उसके ऊपर बेसिकली हरका आ जाती है, जज़म आ जाती है, तो वो तो एक लास्ट, रा इज नॉट द सेकंड लास्ट करेक्टर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. अच्छा, जो पास्ट टेंस हमने किए ना, पास्ट टेंस में हमने ये देखा कि हुआ के केस में जो जो लास्ट लेटर है उस पर फतहा होना चाहिए. ठीक है. जो हुमा का केस था मैस्कुलिन, उसके अंदर लास्ट लेटर के ऊपर फतहा होना चाहिए और साथ अलिफ होना चाहिए. फतहा एंड अलिफ. राइट. नसरा. करेक्ट. और हुम के केस में क्या होना चाहिए? लास्ट लेटर के ऊपर हमारे पास ऊ होना चाहिए और वाव एंड अलिफ होना चाहिए. करेक्ट. हिया पे आ जाते हैं. हिया में हमने कहा नसरत. हमने कहा लास्ट लेटर के ऊपर हमारे पास फतहा होना चाहिए और ता होना चाहिए सुकून के साथ. सही. राइट. फिर हुमा पे आते हैं फेमिनिन नसरता. तो हमने कहा लास्ट लेटर के ऊपर फतहा होना चाहिए और ता अलिफ अच्छा, के साथ होना समझ चाहिए. गया. ओके ओके समझ रहे? ओके ओके.
फतहा एंड ता अलिफ. हाँ, So this is the total ending. ठीक है, टोटल एंडिंग आपका लास्ट लेटर प्लस वट एवर इज एडेड टू इट, दैट इज द टोटल एंडिंग ऑफ पास्ट टेंस. यू कैन नॉट चेंज इट. वरना आप पास्ट टेंस की जो पूरी वो है ना चार्ट जो हाँ, उसको आप डिरेल कर देंगे कंप्लीटली. सारी फॉर्मेशन ही खराब कर देंगे अगर हम फॉर्मेशन खराब हो गई सारी उसकी ना. तो दैट यू कांट चेंज. एनी चेंज हैज टू कम बिफोर दैट. सो इसलिए सेकंड लास्ट लेटर को कसरा किया जाता है पास्ट पैसेज के केस में. और उससे पहले जितने भी लेटर्स हैं, इफ दे डोंट हैव अ सुकून, यू मूव इट टू धम्मा. दैट्स व्हाट यू डू. मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. फॉर एग्जांपल इस्तगफरा, ही sought forgiveness. इसका पैसिव बनाते हैं. क्या पैसिव होगा इसका? सीन के ऊपर सुकून है, पहला लेटर आया, which haircut should you take? उस्तगफिरा. सीन के ऊपर सुकून है तो विल लीव द सीन. ठीक है. ता के ऊपर फतहा है, वी विल मेक इट दम्मा बिकॉज इट इज नॉट द सेकंड लास्ट लेटर, राइट. गाइन के ऊपर सुकून है, विल लीव द गाइन. फा के ऊपर फतहा है, इट इज द सेकंड लास्ट, वी आर गोइंग टू मेक इट कसरा, right? And then the last one remains the same. Ustughfira. He was made to seek forgiveness. You understand? That is the process. And once you know this process, you can produce the entire chart just like any other chart. उस्तुगफिरा चार्ट आप पूरा बना सकते हैं. उस्तुगफिरा, उस्तुगफिरा, उस्तुगफिरु, उस्तुगफिरत, उस्तुगफिरता, उस्तुगफिरना, and so on so forth. Nothing changes there. ठीक है, चार्ट remains the same. तो अगर वो फ्रूट चार्ट आपको आती है तो फिर ये भी आती है. ठीक है. अब इसमें फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि द फर्स्ट केस यू नो ही sought forgiveness. In the second case, you know he was asked by somebody to seek forgiveness, but you do not know who asked him. Action उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. The inside pronoun is the done to in this case. उसके ऊपर एक्शन हो रहा है. The first के केस में एक्शन करने वाला प्रोनाउन होता है, doer. That's the difference. Clear है? Yes. एक चीज करते हैं. I think it's a good point in time कि मैं एक सूरा आपको बताऊं, क्योंकि मेरा वो प्लगइन काम नहीं कर रहा ना. I have to go this route. नहीं यार, वो I miss my plugin. क्या हुआ उस प्लगइन को फादर में? यार वो हाँ, वो पता नहीं काम नहीं कर रहा. वो कहते हैं कि मेरा एक्चुअली ये लैपटॉप जो है 32 बिट है, तो उन्होंने उस प्लगइन को अपडेट किया है 64 पे. तो अब उसके बाद जो है ना, वो मैं फंस गया उसके बाद से. So I'll just take few ayahs, copy here. चलो, we have Quran.com, no problem. Is a shamsu कुविरत. kuwirat. ये जो है ना, ये बड़ा अंदर से निकला है तला के, है तला. अच्छा, ये था जो मैंने याद किया है. Yes. I often अगर मैं कभी जमात कराऊं तो मैं अमूमन फजर में ये कराता हूँ. हाँ, लेकिन फाद भाई यहाँ पे फिर हमने रा को क्यों नहीं वो किया, री क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नसरत वाली अभी यही बात पड़ी थी ना, तो क्योंकि अच्छा, जो लास्ट पास्ट का जो उस बात लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर प्लस ता उसकी जो साउंड है, यानी हमने सिर्फ बेसिक को चेंज करना है, बाकियों को नहीं. सेकंड लास्ट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर, और जो अच्छा. बीच में जितने भी आ रहे हैं, अगर वो फतह या कसरा है तो वो दम्मा लेकिन में नहीं, मैं ये चेंज. कह रहा हूँ यानी वो बेस जो है, बेस नाउन हुआ, सिर्फ उसके ही चेंज होंगे बस, और किसी के नहीं. सोहेब, जो एक्टिव फॉर्म है वो है कव्वरा. हम्म. कव्वरा का मतलब ही रैप्ड. ठीक है. कव्वरा का मतलब ही हुआ कव्वरा, हुमा कव्वरा, हुम कव्वरू, हिया कव्वरत. अवरत. ठीक है.
आपने इसको बनाया पैसिव। पैसिव कैसे बनाया? फर्स्ट लेटर को आपने चेंज कर दिया दम्मा के ऊपर, ठीक है। सेकंड लेटर जो है वो बेसिकली 3 ही लेटर्स है इसके अंदर अभी, देयरफॉर सेकंड लेटर विल चेंज इनटू कसरा, ठीक है। तो यहां पे आ गया कसरा, कुव्वी। और लास्ट लेटर जो है वी डोंट चेंज द एंडिंग। मेरे घर में फायर अलार्म बज गया, इग्नोर इट। कुव्वीरा, that is the passive form. It means he was wrapped. एक मिनट यार, एक मिनट तो मैं देख लूं बस, सीरियस मसला ना हो। I was about to say हम तो इग्नोर कर देंगे, आप जाके देख लें, ठीक है, प्लीज। अच्छा बंद हो गया, जरूर कोई पराठे बन रहे होंगे। मैं कहने लगा था कि कोई पराठे बन रहे, हाँ। लगता है गर्मा गर्म। हमें तो नसीब नहीं होते भाई, हम खुद बना के खा लेते हैं हर कोई। अच्छा चले, रिकॉर्ड हो गई That's all ये बात रिकॉर्ड हो अरे गई ये तो रिकॉर्ड हो गया यार, और यूट्यूब पे भी आ जाएगी। Yes, चले it. कोई बात नहीं, आपको पता नहीं हम ही एडिटर हैं, ठीक है, ठीक है। तो जी, मीडिया मैंने आजाद नहीं है इधर भाई, मीडिया जो जी है मैंने एडिटिंग बहुत आजाद नहीं है। देखी है आपकी लेक्चर्स के अंदर। अच्छा कुवीरा, सोहेब समझ आया ये कैसे बना है कुवीरा? इज दैट क्लियर? जी आप जी जी, तो अब इस Yes. कुवीरा, हुआ कुवीरा, हुमा कुवीरा, हुम कुवीरू, हिया कुवीरा, he was wrapped, is a shamsu kuwirat, ठीक है। when the sun will be wrapped, why will ये क्यों आया? देखते हैं किसको याद है, और will be और is। हाँ, अब यानी इसमें इसका इजा मतलब इजा है ना की वजह से, कि ये किसी इजा भी की वजह हर्फ के से, बगैर आ नहीं सकता ना, ये यानी नहीं इट नहीं राइट। हाँ, नहीं, इजा की वजह इजा से। की वजह से ना, इजा What उसकी does इजा, इजा फ्यूचर mean? अच्छा Push अच्छा is में the अच्छा, सकती meaning है, हाँ in the व्हेन हाँ, ओके, present or future, right? प्रेजेंट, हाँ when the sun will be और sun is wrapped, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपने करना है उसको। तो you are actually using a past passive and you are actually pushing its meaning in the present or future, ठीक है। यस, when the sun is wrapped, this is जुमला इस्मिया, मुब्तदा, कुविरत is खबर फी महल्ली रफा, ठीक है। and in itself it's a जुमला फ़ेलिया, and what is the doer? डूअर इज अननोन। करेक्ट, फंसाना चाहा मैंने, फंसे नहीं बच्चू, ठीक है। इसके अंदर डूअर है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर है डन टू, द इनसाइड प्रोनाउन इज डन टू। व्हाट इज द इनसाइड प्रोनाउन? इनसाइड प्रोनाउन है ही नहीं इसके हिया अंदर कुछ। नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा, वो कुविरत इस कुविरत कौन सी नसरत, एंडिंग है? हिया, Yeah. हिया, हिया हिया is the inside pronoun, but that inside pronoun is a done to, not a doer. It's not doing the action, it is the action done to, okay. So इसको आप इस तरह कर सकते हैं, when the sun it is wrapped, that's how you could translate this, okay, because this it would represent the hiya inside, but it is passive, not active. और क्या Clear? मतलब when the sun it is wrapped, हाँ, इस तरह लिखे ट्रांसलेशन। कुविरत हिया है ना, there is a hiya inside. So if I don't write it, I'm ignoring the pronoun, right? Right? So I wrote it here, so I can cover for the hiya inside. अच्छा, ठीक है? पर बात कई दफा हम, जैसा तुमने पहले कहा था कि हमें सिमेंटिक तरीके से भी लिखना पड़ता है, तो हम ट्रांसलेशन में कई दफा इग्नोर कर देते हैं। कर देते हैं इग्नोर। इस पे आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब मैं इसी चीज को लिखूं, when the sun is wrapped versus when the sun it will be wrapped or it is wrapped.
आपके पर्सपेक्टिव से इसमें डिफरेंस हो सकता है एज अ ट्रांसलेटर. यू माइट सी लिटिल बिट मोर एम्फेसिस विद इट एंड लिटिल लेस एम्फेसिस विदाउट इट. कि जब आप एक चीज के बारे में 2 दफा उसको एड्रेस करते हैं, आप पहले उसका नाम ले रहे हैं व्हेन द सन, एंड देन यू आर एड्रेसिंग इट बैक अगेन विद अ प्रोनाउन, इट इज रैप्ड. है ना? मैं कहता हूं यार व्हेन तलहा ही प्लेज स्क्वॉश, और मैं कहूं व्हेन तलहा प्लेज स्क्वॉश, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? आई एम रिपीटिंग. There is more emphasis when you have an additional pronoun going back to the thing you're talking about. Right? So जो as a translator आप it use करें ना करें वो आपकी मर्जी है, but if you linguistically want to be more closer to what the ayah is saying, then pronoun makes sense. And it also probably is little bit more emphasis than a standard way of saying. ठीक है? ये सिर्फ एक आया इज अ शम्सु कुव्विरत, इतनी स्ट्रॉन्ग आया है. आप आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे व्हेन एक ऐसी जगह पे एक ऐसी कंडीशन के लिए यूज होता है दैट इज बाउंड टू हैपन, दैट इज बाउंड टू हैपन, दैट इज ऑलमोस्ट 100%. वर्सेस व्हेन आई गो टू द शॉप आई विल ईट आइसक्रीम, versus if I go to the shop, I will eat ice cream. Which one is more assurance? किस में assurance ज्यादा है? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में. पहले वाले में. पहले वाले में. दूसरे वाले में क्यों नहीं है assurance? क्योंकि कंडीशन मैं आ गया गया. तो अगर है, conditional है. It's not sure that I'm going to go, right? In the first one, it's absolutely sure I'm going to go. The decision is made. So first, here the decision is made already. Second, the decision is communicated in past tense. Can you change the past? Can you? You cannot change the past. But present you can change. Future you can change. Right? And it is made passive. So there's so much going on in this small ayah. Is a shamsuku virat. Right? So that's it. One example. Wa is a nujumun qadarat. I believe qadarat meant settle down or scatter, I believe. Fall, losing their luster, losing their light. So then they will be made to lose their light. The stars, when they will move, made to lose their light. So this is unkadarat. This is not a passive. This is not a passive. This is a normal one. There is no un, right? It's a normal one. Now, but wa is al jibalu suyirat. When the mountains scattered. Ji. Suyirat is passive. Okay? When they are completely scattered or moved away. Okay? Made to move away. Suyirat. This is su beginning, and the second last harka is taking the kasra. Wa isal isharu uttilat. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन, ये पैसिव तो है ही है, यू सेड कि पास्ट भी है. जी अभी हम सिर्फ पास्ट पैसिव कर रहे हैं, पास्ट भी कर रहे हैं. अभी हम प्रेजेंट नहीं कर रहे, सिर्फ पास्ट कर रहे हैं. ओके, नहीं वो ठीक है, क्योंकि आई वाज लिटिल कंफ्यूज क्योंकि अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और उसको बट इन अ पास्ट टेंस में. जी एक्चुअली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे he helped, he was helped. ठीक है, इस तरह यूजुअली पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग इजा विद द पास्ट टेंस, वी लर्न दैट इट पुशेस द मीनिंग इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर. याद है वो आपको, मुस्तफा भाई?
नहीं आपको याद है? मैं जी लिंग्विस्टिकली नहीं, वैसे वैसे जी मतलब जी कि नॉट अरेबिकली, बट अगर अल्लाह ताला इसमें हमें मेंशन कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जी बट इन अ पास्ट टेंस. correct. Allah Ta'ala is talking about the future and he's using a past tense to communicate that this is so true that it is the decision that is already made. You can't change it. It's so firm. Okay, that's why the past tense. और ये जो सूरा है ना, this is one of the earliest Makkan surahs. ये वो सूरा है कि ये उस टाइम पे रिवील हुई थी जब अभी उन्होंने शायद अनाउंस भी नहीं किया था कि देयर वी आर आई मीन फॉलोइंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. They were still hiding in the first 3 years, I think, of the revelation. ये उस वक्त की सूरा है. ये उस जब आप मक्कन सूरस को देखेंगे, they talk a lot about the judgment day and they talk a lot about the akhirah and all of those things, just to communicate the message to those people how it is going to be. So इस सूरा में अच्छे खासे passives use हुए हैं. So the whole idea of passive is to hide the doer, introduce the done to, and and um, and inshallah it gives us more kind of thinking room that who बात is बस going to मैंने do that. जी आपकी इस बात से लगाया, जहाँ पे भी फ्यूचर का जिक्र हो रहा है ना, जहाँ पे क़यामत का और अल्लाह ताला कसम खा रहा है, वहाँ पे हमेशा पैसिव में बात की गई है. मसलन सूरह तकवीर के अंदर इसके फौरन बाद इसका जो पेयर है सूरह इन्फितार, इज़ा समाउन फतरत, उसके अंदर भी यही है. वो तला ये है, हाँ, सही कह रहे हो, कई जगह पे ऐसा है, बट फतरत इज दिस. फतरत, हाँ वो नहीं होगा पैसिव पे. हाँ, फतरत इज नॉट पैसिव. ठीक है, इट्स एक्टिव. इवन इस सूरा के अंदर भी आप देखेंगे ये पिछला जो हमें अनकदरत नजर आया, दैट इज नॉट पैसिव. ठीक है, और इनके पीछे हिकमत है, यानी विच इज नॉट वेरी डीप स्टडी कि व्हाई दिस इज नॉट पैसिव एंड दैट इज पैसिव. ठीक है, ये पूरी एक स्टडी है, पूरी बलागा स्टडी है ये, इसके पीछे रिटोरिक और पता नहीं कौन कौन सी. ठीक है, वो बहुत आगे की कहानी है. ठीक है, लेकिन फ्रॉम recognition standpoint, when you are looking at a fail that has a typical ending that you are familiar with, always look for the fact if it is passive or not. ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे के फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं. कुछ ऐसे फेल्स हैं जिनमें ऑलरेडी कसरा होता है, जैसे जैसे ये फेल है हसीबा. ये बस छोटा क्यों है? हसीबा, he calculated. You will make it husiba. The only difference is the beginning. Right? The only difference is beginning. But just by changing the beginning, you get the OE sound. So इस तरह की कुछ subtle चीजें होती हैं जिसको आपको consider करना पड़ेगा. ठीक है. What I advise you is मैं आपको कुछ fails भेजूंगा, इंशाल्लाह WhatsApp पे I'll send you few. You try to produce the full chart out of them. ठीक है, हुसीबा, हुसीबा, हुसीबू, हुसीबत, हुसीबता, हुसिबना, हुसिबता, हुसिबतुमा, हुसिबतुम, हुसिबती, हुसिबतुमा, हुसिबतुन्ना, हुसिबतु, हुसिबना. That's what you should do. ठीक है, make yourself familiar with it, comfortable with it. ये पैसिव्स आपके नोट्स में नहीं है, they're not in your notes. Okay, so there is no coursework for that. तो ये हम इधर ही करेंगे ज्यादा, और जहां पे मुझे कुछ मिलेगा ऐसे नोट्स जो कि आपको मैं दे सकूं एज प्री रीड, सो I'll find and I'll give them to you. ठीक है, any questions so far? No? Okay. So inshallah we will stop here. सूरह मुनाफिकून में भी कुछ पैसिव्स यूज हुए, जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे पैसिव नजर आएंगे आपको उसमें भी. So inshallah this will help you open up things from the sentence structure standpoint. Passives also have a maf'ul, passive also have muta'alliq bil fails, but they don't have doers, they instead have done tos. सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आउटसाइड डूअर वगैरह सब कुछ वैसे ही रहते हैं, बट इन दिस केस इट्स नॉट आउटसाइड डूअर, इट्स आउटसाइड डन टू. बेसिकली दैट्स द ओनली डिफरेंस. ठीक है,
चले इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ मजीद एग्जांपल्स के साथ एंड विल मेक प्रोग्रेस. आई विल ट्राई टू मेक सम असेसमेंट एक्सरसाइज आइदर इन द नेक्स्ट क्लास और द क्लासेस आफ्टर. मैं बता दूंगा आप लोगों को इन एडवांस जिसमें हम थोड़ी सी सेल्फ असेसमेंट भी कर लेंगे इफ दैट्स ओके. ठीक है. हाँ, फाद 2 मिनट है. हाँ बिल्कुल मैंने चीज डिस्कस करनी थी बाद में. ठीक है. ठीक है. चलें दोस्तों फिर थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर आप लोगों से सबसे मुलाकात होती है. मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ दोस्तों. लो. फाद यार मैंने सिर्फ एक चीज दिखानी थी 2 मिनट में. लेट मी